Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare जय राधा पद सती राधा पद सती राधे Radha Pati Sati Radha Pati Sati Radha जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी धर्म प्रणाम प्रभु जी प्रणाम सबको। यस प्रभु जी ओवर टू यू प्रभु जी तो आज मुझे श्लोक दिया गया है भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 28। तो कीर्तन तो हो गया, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। एते चमशकला पुंसा, रिपीट प्लीज। एते चमशकला पुंसा कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे क्रीडयन्ति युगे युगे एते चंसकला पुंसा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे क्रीडयन्ति युगे युगे एते चंसकला पुंसा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे क्रीडयन्ति युगे युगे please try somebody. एते चांस कला पुंसा Ete Chashkalam Punsha कृष्णस्तु भगवान स्वयं Krishnastu Bhagavan Swayam इंद्रियारि व्याकुलं लोकम् Indriyari Vyakulam Lokam क्रीडयन्ति युगे युगे Vridayanti Yuge Yuge. So word to word, ete, all these, cha, and amsa, plenary portions, kala, portions of the plenary portions, pumsha, of the supreme, Krishna, Lord Krishna, stu, but
Bhagavan, the personality of Godhead, Swayam, in person, Indraarti, the enemies of Indra, Vyakulam, disturbed, Lokam, all the planets, Mridayanti, gives protection, Yuge Yuge, in different ages. So, translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. All the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. But Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theist. किसी के पास अगर हिंदी ट्रांसलेशन है तो पढ़ सकते हैं एक बार just the translation. Anyone? Hindi translation? मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा but हिंदी most people understand. हरे कृष्णा। Hare Krishna. उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। मैं अभी इंग्लिश में पढ़ूंगा पर बिकॉज हिंदी में मेरा इतना ये नहीं है. So start. In this particular stanza, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, is distinguished from other incarnations. He is counted amongst the avatars incarnations because out of his causeless mercy, the Lord descends from his transcendental abode. Avatara means one who descends. All the incarnations of the Lord, including the Lord himself, descend to the different planets of the material world as also in different species of life to fulfill particular missions. Sometimes he comes himself, and sometimes his different plenary portions or parts of the plenary portions or his differentiated portions, directly or indirectly empowered by him, descend to this material world to execute certain specific functions. Originally, the Lord is full of opulences, all prowess, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. When they are partly manifested through the plenary portions or parts of the plenary portions, it should be noted that the certain manifestations of his different powers are required for those particular functions. When in the room small electric bulbs are displayed, it does not mean that the electric powerhouse is limited by the small bulbs. The same powerhouse can supply power to operate large-scale industrial dynamos with greater volts. Similarly, the incarnations of the Lord display limited powers because so much power is needed at that particular time. For example, Lord Parshurama and Lord Nrsimha displayed unusual opulence by killing the disobedient Kshatriyas 21 times and killing the greatly powerful atheist Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was so powerful that even the demigods in other planets would tremble simply by the unfavorable rising of his eyebrow. The demigods in the higher level of material existence many times excel the most well-to-do human beings in duration of life, beauty, wealth, paraphernalia, and other respects.
Still, they were afraid of Hiranyakashipu. Thus, we can simply imagine how powerful Hiranyakashipu was in this material world. But even Hiranyakashipu was cut into small pieces by the nails of Lord Nrsimha. This means that anyone materially powerful cannot stand the strength of the Lord's nails. Similarly, Janma, Janmadhya, Janmadagnya displayed the Lord's power to kill all the disobedient kings powerfully situated in their respective states. The Lord's empowered incarnation, Narada, and plenary incarnation, Varaha, as well as indirectly empowered Lord Buddha, created faith in the mass of people. The incarnations of Brahma and Dhanvantri displayed his fame, and Balarama, Mohini, and Vamana exhibited his beauty. Datreya, Matsya, Kumara, and Kapila exhibited his transcendental knowledge. Nara and Narayana rishis exhibited his renunciation. So all the different indirectly or directly empowered incarnations of the Lord manifested different features, but Lord Krishna, the primeval Lord, exhibited the complete features of Godhead, and thus it is confirmed that He is the source of all incarnations. And the most extraordinary feature exhibited by Lord Sri Krishna was his internal energetic manifestation of his pastimes with the cowherd girls. His pastimes with the gopis are all displays of transcendental existence, bliss, and knowledge, although these are manifested apparently as sex love. The specific attraction of his pastimes with the gopis should never be misunderstood. The Bhagavatam relates these transcendental pastimes in the 10th canto, and in order to reach the position to understand the transcendental nature of Lord Krishna's pastimes with the gopis, the Bhagavatam promotes the student gradually in 9 other cantos. According to Srila Jiva Goswami's statement, in accordance with authoritative sources, Lord Krishna is the source of all other incarnations. It is not that Lord Krishna has any source of incarnation. All the symptoms of the supreme truth in full are present in the person of Lord Sri Krishna, and in the Bhagavad Gita, the Lord emphatically declares that there is no other greater truth or equal to himself. In this stanza, the word Swayam is particularly mentioned to confirm that Lord Krishna has no other source other than himself. Although in other places the incarnations are described as Bhagavan because of specific functions, nowhere are they declared to be the supreme personality. In this stanza, the word Swam signifies the supremacy of the Samambanam. Okay, last paragraph. The Pura lamba hai purport itself. The Samambanam Krishna is one without a second. He himself has expanded himself in various parts, portions, and particles as Swayam Rupa, Swam Prakasha, Tat Ekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilasa, Avatara, Avesha, and Jivas, all provided with innumerable energies just suitable to the respective persons and personalities. Learned scholars in transcendental subjects have carefully analyzed the Samambanam Krishna to have 64 principal attributes. All the expansions or categories of the Lord possesses only some percentages of these attributes, but Sri Krishna is the possessor of the attributes 10%, and his personal expansions such as Swam Prakasha and Tat Ekatma up to the categories of the avatars, which are all Vishnu Tattva, possesses up to
93% of these transcendental attributes. Lord Shiva, who is either Avatara or nor Avesha, nor in between them, possesses almost 84% of the attributes. But the jivas, or the individual living beings in different statuses of life, possesses up to the limit of 78% of the attributes. In the conditioned state of material existence, the living being possesses these attributes in very minute quantity, varying in terms of the pious life of the living being. The most perfect of living beings is Brahma, the supreme administrator of one universe. He possesses 78% of all the attributes in full. All other demigods have the same attributes in less quantity, whereas human beings possesses the attributes in very minute quantity. The standard of perfection of for a human being is to develop the attributes up to 78% in full. The living being can never possess attributes like Shiva, Vishnu, or Krishna. A living being can become godly by developing the 78% transcendental attributes in fullness, but he can never become, he can become a Brahma in due course. The godly living beings who are all residents of the planets in the spiritual sky are eternal associates of God in different spiritual planets called Haridhama and Maheshadhama. The abode of Lord Krishna above all spiritual planets is called Krishna Loka or Goloka Vrindavan, and the perfected living being, by developing 78% of the above attributes in fullness, one can enter the planet of Krishna Loka after leaving the present material body. ज्ञानतिम्यान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगपति गोपेश गोपिकानंद नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुधरे प्रेमामि हरि प्रिय पंचाकल्पद्रुपेश कृपा सिंधु वेजपतिनाम पावने वैष्णवे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रदान श्री विद्यावृंद ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शनिवार पाशास्ताय हरे कृष्णा सॉरी थोड़ा लंबा है पर्पट बट पढ़ना इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें सारा कुछ ही जो इम्पोर्टेंट मेंशन पॉइंट्स है लाइक प्रभुपाद दे चुके हैं ऑलरेडी जितना रिलेटेड पॉइंट्स है और हर एक चीज को तोड़ के भी समझाया है तद एकात्म रूप एंड एवरीथिंग लाइक प्रभुपाद अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन इसमें ऑलरेडी दिए हुए अदरवाइज प्रभुपाद का लेक्चर मैं देख रहा था लाइक यस्टरडे आई वाज लिसनिंग तो उसमें प्रभुपाद थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाते हैं चीजों को तो इतना डिटेल्स में नहीं जा रहे प्रॉपर बट स्टिल जस्ट बिकॉज हम लोग एक लर्निंग फेज में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं चीजें सो तो ये भागवतम का जो ये श्लोक है इसको बोलते हैं सबसे सिग्निफिकेंट सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक या फिर सूत्र लाइक जिसको कनेक्ट करके हमें लाइक ऑथेंटिसिटी का एक प्रमाण मिलता है बोलते हैं ना जैसे भगवत गीता में भी एक सिग्निफिकेंट श्लोक है आचार्यगण बोलते हैं मैं पर्सनली सुना था श्रीमद गौर गोविंद महाराज उनका क्लास में बोलते हैं ना मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु उस तरह से यहाँ पर एतेचम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे तो इसी बात को श्रील जीव गोस्वामी और जो दूसरे आचार्यगण है वैष्णव परंपरा में या ब्रह्म माधव वैष्णव गौरी परंपरा में तो बेस करके हर एक श्लोक को लाइक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं अदरवाइज भागवतम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे श्लोक में हम लोग देखते हैं कि
विष्णु को ही मतलब जो है सबसे और लाइक ओरिजिनल पर्सनैलिटी या हिज अवतारी ऐसे मानते हैं लोग जनरली। ऑल्दो ये बोनाफाइड नॉलेज जब या फिर भगवान भगवान को प्राप्त करने के लिए चार संप्रदाय है, लेकिन ओनली ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में ही ये सिद्धांत है कि जो कृष्णा ही एक अवतारी है। अदरवाइज दूसरे जो संप्रदाय में ये कंफर्मेशन नहीं है। लाइक इन द श्री संप्रदाय ऑल्सो वहां पर विष्णु को ही सबसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है और विष्णु को ही ओरिजिनल पर्सनैलिटी माना जाता है जनरली। सो हाँ, कृष्णा, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट किया है, तो उसी से ही मैं डिस्क्राइब करूंगा। हाँ, सो मैं कृष्णा मतलब यद्यपि कृष्णा अवतारी है, लेकिन भगवान जो है स्वयं यहाँ पर अ, आते हैं, अवतार लेते हैं खुद भी। बट भगवान कृष्णा भगवान भगवान कैसे भगवान का क्वालिटीज होता है। सो भगवान का जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने 6 क्वालिटीज बताया है जो पराशर मुनि ने मेंशन किया था। पराशर मुनि इज अगेन द फादर ऑफ लॉर्ड व्यासदेव, जो लिटरेरी इनकारनेशन है। 6 opulences। तो बिसाइड्स दैट इन ब्रह्म संहिता बोलते हैं यस्यैक निवासित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलाज जगत अंधनाथ विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। Brahma and other lords of the mundane worlds appearing from the pores of hair of Mahavishnu remain alive as long as the duration of one exhalation of the later Mahavishnu. I adore the supreme primeval Lord Govinda, of whose subjective personality Mahavishnu is the portion of portion. So यहाँ पर बता रहे हैं like difference दिखा रहा है यहाँ पर विष्णु एंड कृष्णा। इवन महाविष्णु का जो लाइफ स्पैन है वो भी कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। लाइक जिसका पोर से सारा सृष्टि होता है, यूनिवर्स का सृष्टि होता है। बट लाइक एंड दूसरा रेफरेंस में ले रहा हूँ भक्ति सामर्थ्य सिंधु से, जिसमें कृष्णा अगेन वाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे थे ना कि 64 क्वालिटीज है, या फिर परसेंटेज वाइज 93% विष्णु तत्व एंड 78% फॉर द जीवस। बट सो कृष्णा क्या है जो लाइक कृष्णा को डिफ्रेंशिएट करते हैं? सो भक्ति सामर्थ्य सिंधु श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं 4 पॉइंट्स। तो क्या है? लीला माधुर्य, भक्त माधुर्य, वेणु माधुर्य एंड रूप माधुर्य। ये 4 पॉइंट्स बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो लीला माधुर्य लाइक Krishna is a performer of wonderful varieties of pastimes. तो कृष्णा अलग अलग लीला करते हैं, अब स्पेशली उनका चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स या फिर वृंदावन पास्ट टाइम्स। एंड Bhakta Madhurya, he is surrounded by devotees endowed with wonderful love of Godhead. तो उनके पास हमेशा उनका devotees रहते हैं, like and Venu Madhurya, he can attract all living entities all over the universes by playing on his flute. तो बताते हैं ऐसा कि कृष्णा जो है अपना बांसुरी, कृष्णा के पास अलग अलग बांसुरी हुआ करते थे। तो हर एक अलग बांसुरी और हर एक अलग नोट्स का अलग अलग पर्पस हुआ करता था। जैसे कि गाय चराने चाहते थे तो उनका उसका एक अलग, फिर ब्रजवासी को सेटिस्फेक्शन देने के लिए अलग सा। एंड by Brajavasis I mean all the inhabitants of Vrindavan, including plants, including the like everything in the forest, like the rocks, the streams,
water bodies, everything. And fourth point would be the Rupa Madhurya. कृष्णा को जैसे बोलते कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम. So millions of millions like कंदर्प like कामदेव को कंपैरिजन कर नहीं कर सकते भगवान का जो ब्यूटी है उसके सामने में. Henceforth the name मदन मोहन. So ब्रह्म संहिता में फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं. लाइक ऑल्सो इन ब्रह्म संहिता कृष्णा को कंपेयर किया जाता है कैंडल्स के साथ में. लाइक कृष्णा को एक ओरिजिनल कैंडल एंड और फिर सेम जैसे कि हम लोग एक कैंडल से दूसरा कैंडल्स जलाते हैं लाइक लेकिन उसका क्वालिटी एक समान रहता है, रिड्यूस नहीं होता. It is quoted from like departure eva santram abhupetya. And in the Srimad Bhagavatam also, it is described that the pastimes of Mahavishnu stealing of the sons of Brahmana in Dwarka so that he can somehow get the darshan of Lord Krishna. This incident proves that Krishna is the original personality of Godhead and Vishnu is an expansion. So द्वारका में भी एक ब्राह्मण का जो बच्चा है उसको महाविष्णु ले जाते हैं. He gives birth like but then Krishna himself goes one there is एक समय में अर्जुन के साथ कृष्ण खुद जाते हैं उस चीज को रोकने के लिए जो कि बच्चा को मारा जा रहा है. Then like why it is happening, कृष्णा प्रोटेक्शन के लिए खुद जाते हैं. एंड इन द प्रोसेस जो है महाविष्णु के पास चले जाते हैं कि बेसिकली महाविष्णु का ही इच्छा रहता है कि उनको दर्शन करना है कृष्ण का. नाउ कमिंग बैक टू व्हाई कृष्णा इवन टेक्स अवतार. तो कृष्णा क्यों अवतार लेते हैं? सो दो रीजंस है. यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम, भगवद गीता में बोलते हैं. एंड जो धर्म स्थापना करने के लिए. एंड दूसरा पॉइंट है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं जस्ट अपना डिवोटीज को परित्राण करने के लिए एंड धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए. ओके एंड नाउ प्रभुपाद इस चीज को रिलेट करते हैं. अपना जो लेक्चर है प्रभुपाद रिलेट करते हैं कि कृष्णा हम लोग जो है कृष्णा की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं. कृष्णा is the original Bhagwan and he possesses everything. And since but since we are in a Kali Yuga, हम लोग कली युग में है एंड हम लोग भूल चुके हैं. हम लोग भूल चुके कि भगवान हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है और हम जो है खुद भगवान बनना चाह रहे हैं. So so we are here in this material world. हम लोग जो है इस material world में है जो कि बोलते हैं जेल जैसा है ना. इन ब्रह्म संहिता अगेन इट इज डिस्क्राइब देवी धाम. इट इज देवी धाम को बेसिकली दुर्गा वॉल से कंपेयर किया जाता है लाइक टॉल वॉल. सो जिसके अंदर हमें त्रिताप क्लेश भोगना पड़ता है. बट हम मानते नहीं है. हम बोलते हैं कि हम लेकिन फिर भी हम मानते नहीं गवर्नमेंट को. लाइक जैसे कि प्रोपाल एग्जांपल देते हैं जेल के अंदर रहते हुए भी जो प्रिजनर्स है बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन द गवर्नमेंट बट दे आर ऑलरेडी इन द जेल. वो लोग ऑलरेडी जेल के अंदर में है बट तो ऑलरेडी कष्ट में रह रहे हैं बट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी डेंजरस सिचुएशन में है. एंड अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिथ्य मन्यते. सो लाइकवाइज हम जो है जस्ट लाइक कंसा का एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी. जो उनका प्रोपेंसिटी है सेल्फ इंटरेस्ट का.
या फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन का, जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को आसुरी क्वालिटी बताते हैं। कलयुग में हर एक घर में सबको पता ही है ये सब बातें, बट स्टिल आसुरी क्वालिटी सभी के अंदर में है। एंड जो आसुरी क्वालिटी का एक पॉइंट है कि उनका अगर इच्छा के बीच अगर कुछ रुकावट आता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपना इच्छा को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि देवकी वासुदेव लाइक अपना बहन को खुद जैसे शादी के दिन छोड़ने जा रहे हैं, रथ चला रहे हैं खुद ही। लेकिन जब आकाशवाणी हुआ तब अ, तो पता चला कि लाइक उनका मृत्यु होने वाला है देवकी का पुत्र से। तो उन उनको लगता है कि लाइक अभी तो इवन इवन जो जिस बहन को इतना प्रेम से छोड़ने जा रहे थे, और जिस अपना इवन ब्रदर इन लॉ को, वासुदेव, तो उन दोनों को ही अभी लाइक देवकी को ही अभी बाल पकड़ के खींच के अभी ही ट्राई टू किल हर, मारना चाह रहे थे। तो दिस आसुरिक एंड लाइकवाइज अभी this propensity in subtle way is there in every one of us, although हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, but many times practically speaking हम लोग अपना ही इच्छा को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। लाइक we are reading, we are hearing from the acharyas so many things every day, but how much we are trying to implement these things and how much we are trying to abide by these things. We try to analyze everything from our own perspective. हम लोग अपना नजरिए से सब चीज को देखने की कोशिश करते हैं, सब चीज, ना कि शास्त्र चक्षु और जो बोलते हैं ना कि गुरु साधु शास्त्र, what the guru says, what the shastra is saying, what acharyas are saying. So instead of this, we focus more on uh, like what we are trying to like put interest on. So सो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली जब कुछ शिक्षा ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं हम लोग, वेदर वेदर इट इज अप्रूव बाय द आचार्यस, द साधुस, और द शास्त्रस। ये हो गया। एंड already I've a few things I've already mentioned, like what is Krishna, like how Krishna is the original personality. Besides this, अभी basically अभी already चलते आ रहा है इतना दिन से, same thing philosophy के ऊपर में, महातत्व and different incarnations of the Lord. So instead, like in the end of the day, like what we have to understand is like Krishna, in every yugas, Krishna comes in every different forms, and in this particular age of Kali, basically Krishna is there as what, like as Nama avatar. Krishna, in Chaitanya Charitamrita there are many references where it is mentioned clearly that Krishna comes in the form of Nama, Sri Nama, and it is, and it has the same potency as that of Krishna's called Krishna himself, which is Nam Nam Akari Bahudan Ija Sarva Shaktis. Krishna has and Krishna has invested all his energy in his name itself, and therefore, sorry, my Hindi is going really bad. एक तो translation. So हाँ, what I was saying, हाँ, नाम नाम आकारी बहुधन इज सर्वशक्ति तत्रापि नियमित स्मरणीय कालः.
So there's no restriction, like I was saying, in Kamsa was there in the Dwapar Yuga, but in Kali Yuga, in every home, like there is in every living entity, there is both like dual qualities of that of असुरा असुरी क्वालिटी भी है और देवता वाला क्वालिटी भी है. Just because हम हमारे पास देवता वाला क्वालिटी भी है, that's why we are able to take association of the acharyas, the sadhus, and the shastra, and sense enjoyment, sense gratification वाला हमारा वो propensity भी अभी तक नहीं गया है ना. 6 enemies, काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य विषय, तो वो चीजें हमेशा रहता है. So how do we get rid of these things? So like take shelter of the original supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna. And who is the supreme personality of Godhead in the Kali Yuga besides the Harinam is Lord Chaitanya. या फिर हम लोग गाते हैं ना, परम करुणा बहुद्विजैना निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांदा. सो सभी अवतारों का सार श्रीमद महाप्रभु लॉर्ड नित्यानंद. सो सारे अवतारों का सार लॉर्ड नित्यानंद, लॉर्ड गौरांगा. So and so we when we are like when we are connected to Lord Chaitanya, Lord Nityananda, we basically it's like Samombanam, like Prabhupada mentioned in the purport, Samombanam, Krishna. So that's for Kali Yuga. And एक बार मैं देखना चाहता हूँ एक point. Yeah, I think I'll just stop here maybe. And if there is anything else anyone wants to add, or if anyone wants to ask something, they can ask. मैं इतना explain नहीं किया just because Prabhupada did not explain so much regarding the different avatars. All just because हम लोग अगर ब्रह्म संहिता को भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे श्लोक है besides this, जैसे कि रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठान नाना अवतारम अखिलेश किंतु. So उसमें भी बताते हैं like Rama, Nrsimha and everything and every other incarnations are all still the partial incarnation of the Lord. So we can still go through the Brahma Samhita if we want to really know the position. और अलग अलग और दूसरा एक जगह में फिर ब्रह्म संहिता का if we have to analyze analytical अगर हम लोग एनालिसिस करना है, भगवान को जानना है, तो फिर ब्रह्म संहिता इज वेरी साइंटिफिक. तो वहां पर जैसे कि कल भी बता रहा था, आई थिंक somebody gave class, I was hearing, तो वहां पर लाइक मिल्क एंड दही के साथ ना हम लोग इन बता रहे थे, कंपैरिजन था. सो it is also there shiram yatha dadi vikara vishesha yoga sanjayate. So from milk curd comes, but from the curd we cannot form milk. So likewise from Krishna every other incarnation comes, but every other incarnation is comes with a limited energy with limited power for the particular timing. Just like Prabhupada was saying, bulb light bulb को जो example दे रहे थे प्रभुपाद जी, मतलब पावर हाउस में ऐसा नहीं कि लाइक कृष्णा इज द पावर हाउस बेसिकली, एंड बीइंग द पावर हाउस कृष्णा एक फैक्ट्री को भी चला सकते हैं जितना भी वहाँ का मशीन्स एंड एवरीथिंग है. लेकिन जस्ट बिकॉज एक बल्ब को जला रहे इसका मतलब ये नहीं कि जो पावर हाउस का कैपेसिटी एक लाइट बल्ब तक ही लिमिटेशंस है. सो लाइट बल्ब को जला लाइट बल्ब का कैपेसिटी उतना है और पर्पस उतना है, दैट्स व्हाई उतना पावर उसको दिया गया है. अदरवाइज कृष्णा इज
is capable of much more than that. So these are some analytical, chronological order analysis of the Supreme Personality of Godhead Krishna. And yeah, in the end of the day, we should understand that we are with Mahaprabhu in Kali Yuga. So in Kali Yuga, what so the best medicine is Sankirtana movement. So if we are connected with the Sankirtana movement, we are connected with Krishna overall. And every other yugas, different kinds of approaches are given. We have to do the Sankirtana movement. We have to do our japa properly. We have to do the propagation of the holy name to the whole world, to all the living entities. Yeah, that's what Mahaprabhu wants, and if we do that, we go back to Godhead, and it is only through Mahaprabhu के through ही हम लोग जो है कृष्ण का प्रेम मिल सकता है. Otherwise, it is not possible at all. No matter what sampradaya you are from, like if you're not connected to Mahaprabhu, Nama Mahavadanaye Krishna Prema Pradayate, Krishna Krishna Chaitanya Nam Nigotasve Namaha. So Gauranga Mahaprabhu is the only one who can actually give you the mercy of Lord Krishna. And few days back, I was also discussing with one devotee how the realm, the spiritual realm looks like. It is like the form of a lotus petal, and usme the outer lotus petal is basically Mahaprabhu and his team of Sankirtana. And without crossing the first layer of the lotus petal, you cannot enter the inward the inward parts of the lotus or the Dharma. So Mahaprabhu has to give you has to qualify you to enter the Nitya Leela pastimes. So Srimad Mahaprabhu ki jai, Brahma Samhita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. So let's just rest it here for today. And sorry, मैं इंग्लिश में ज्यादा बोल लिया because मेरा जो माइंड में कुछ होता है वो इंग्लिश में ही रहता है, एंड हिंदी में ट्रांसलेशन करने में मेरा दिक्कत हो जाता है. So if anyone has something to ask or something to add, if मेरे से अगर कुछ गलती हुआ है, like if anyone wants to correct also, most welcome. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो किन्हीं के प्रश्न है तो वो रेज कर सकते हैं. Okay, so Prabhuji, there is a question from my side. Prabhuji, it is said like in every yuga, God comes as an avatar or avatari. So it is said like he comes to protect their devotees and to kill the demons, right? So what the actually means of to protect their devotees? Suppose we are playing the role of a devotee, so we are just doing kirtan. No one is harming us, right? So what actually means what the actually meaning of this word, like to protect their devotees? Okay, मैं बता रहा हूँ. अभी मैं कुछ देर पहले एक्सप्लेनेशन दे चुका है इस चीज का. इफ एनीवन हैज ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, तो 6 तरह का एनिमीज वी हैव. काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य. These are also like a means through which adharma comes. It is in the Kali Yuga especially. Like human beings are more degraded. Besides, जैसे कि अभी in the Dwapar Yuga, अलग अलग जगह में like एक साथ, like there is देवता अलग, देवता का quality वाला people, they're different, and persons having the demonic nature, they're in separate body overall. But here in Kali Yuga, for us, we have both the qualities. So in order to like destroy the adharma which we have inside of us, Mahaprabhu is here, and in order to cultivate that
the love of Godhead that is within us. So Mahaprabhu is also there. You know, we can develop and cultivate it through the chanting of Hare Krishna Mahamantra and Cheto Darpana Marjana. So that's what it is. Mahaprabhu has come just to teach us, basically, like the Bhagavad Gita. The purpose, Sarvadharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Braja. How do we Braja, like Vrindavan, you know, Mam Ekam Sharanam Braja. So Vrindavan वाला जो श्याम सुंदर का हम लोग कैसे शरणागति हो सकते हैं, उसी चीज को सिखाने के लिए Mahaprabhu came. And if we follow the footsteps of Sriman Mahaprabhu and his I mean disciplic succession, then we can somehow like learn or progress and maybe like cultivate and change ourselves and elevate ourselves into certain level. Although Kali Yuga के लिए बोलते हैं कि कृपा सिद्धि is basically the only way. We are so fallen, we cannot achieve anything through sadhana siddhi or anything like that. Sadhana siddhi is quite impossible impossible because our body is made of tamaguna, and our body, especially in the Kali Yuga, it is like it is actually disturbed with so many diseases, and the kind of food stuff we are eating, the air we are breathing in, like it is quite impossible, next to impossible. हम लोग साधना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं. That's why we have to rely on the kripa siddhi. Yeah, that's about it. If there's anything else besides this, anyone wants to add, most welcome. Hare Krishna. Okay, thank you, Prabhuji. I hope it was clear, Sanjeev Prabhu. Yeah, it's clear now. Yes, thank you so much, Prabhu. So, do we rest it here, or is there anything else? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. तो ये इन इंग्लिश तो हिंदी से हिंदी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली आप ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं, आप लोगों को डिलीवर कर दिया जाएगा मैसेज अगर ऐसा कुछ डाउट हुआ हो. रेस्ट हिंदी में जो श्लोक है वो अवेलेबल, उसका मीनिंग आपको शेयर कर उससे देख लीजिएगा ग्रुप में. तो कुछ भी डाउट आता है इसके अलावा तो आप शेयर कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भागवतम की Srila Prabhupada ki. श्रील प्रभुपाद की. Thank you so much. Hare Krishna.